Okay. Good evening, people. Usual question before I could go ahead. People able to hear me clearly? Give me yes in chat if people are able to. Okay. Thank you, Utkarsh. Thank you, people. I happened to meet couple of you guys other day. I had a lecture. आप लोग का भी lecture था. It is fun when people are smiling. I understand. तुम लोग CP के student हो. So then I came to know, but it was nice seeing you all. But चलो शुरू करते हैं. Now today we'll be talking about a concept called loop. It's gonna be very important. A program is made up of three things: the sequence, the concept called but branching, that is if else, and the third part loop. अगर ये तीन चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो, that means you have already become a developer, because no logic has other than these three things. So third pillar we are going to learn, quite interesting and quite important thing to talk about, so do make it a point. So अगर अभी भी आपके प्यारे दोस्तों ने अटेंड नो ज्वाइन नहीं किया, तो update them that we are starting. So let's go with the basics, what we always do. तो पहले theory से शुरू करते हैं. Let's understand the concept and then we'll be going more in detail. As usual, I'll ask my team to beam me down. छोटा करते हैं. Thank you. Okay, thanks. So now what are we going to talk about? What are we going to go with? Loops क्या है, कैसे चलते हैं, इनके बारे में थोड़ी चीजें जानेंगे. Let's try to understand few things which are interesting and important for us. So let's go with this. Now the first thing we're going to talk about when it comes to loop is the concept. What do you mean by loop? तो loop का अगर एक concept पकड़ के चलो, whenever we tend to say loop is something which has n number of instruction repeated n times. Now what do you mean by n number of instruction repeated n times? Basically तुम्हारा जिंदगी लूप में चल रहा है. आई मीन एवरी मंडे आई एम वेरी श्योर इट फील्स बैड टू गो टू कॉलेज. नो, थोड़ा अंदर से फील होता होगा कि अरे कॉलेज जाना है यार. एंड एवरी फ्राइडे मे बी वी आर हैप्पी, स्पेशली अगर आपका सैटरडे कॉलेज नहीं है तो फ्राइडे यू मस्ट बी वेरी हैप्पी सेइंग दैट यस, लास्ट डे ऑफ द वीक. सैटरडे संडे, सैटरडे थोड़ा मजा आता है, संडे इसी दुख में जाता है कि मंडे से कॉलेज है वापस. एंड दिस गोज ऑन. So the concept remain is pretty simple. The concept remain is pretty simple. N instructions repeated n times. अब यहाँ पे एक चीज होना जरूरी है, loop has to be finite. Now what do you mean by loop has to be finite? That means finite can be explained in a way: fixed number of steps, fixed number of times. So basically finite means आपके number of steps clear होने चाहिए, number of times कितनी बार चलने वाला है. So if this is not fixed, then तुमको मिलेगा something which we call as infinite loop. एकता कपूर का सीरियल समझो जो कभी खत्म नहीं होता. जस्ट व्हेन यू फील नागिन मर गई, नई नागिन आ जाती है. सॉरी, बैड जोक, बट द कॉन्सेप्ट रिमेंस. आई फील पीपल अंडरस्टैंड. सो अब थोड़ा आगे जाते हैं. जब लूप का बात करते हैं, देयर आर थ्री पार्ट्स. सो व्हेन यू से पार्ट्स ऑफ लूप्स, व्हाट एग्जैक्टली आर द पार्ट्स? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट, जिसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट स्टार्ट कंडीशन, सेकंड एंड कंडीशन, थर्ड स्टेप. अगर इसी तीनों को मैं पकड़ के चलूँ, द स्टार्ट कंडीशन, द एंड कंडीशन एंड द स्टेप. अगर दो बार कंडीशन से कंफ्यूज हो रहे हो, स्टार्ट, इनिशियल वैल्यू फ्रॉम वेयर वी आर गोना स्टार्ट. तुम्हें कहीं से तो चालू करना पड़ेगा. सो दैट्स बेसिकली द इनिशियल वैल्यू विच यू आर गोना वर्क विद. व्हाट इज द एंड कंडीशन? व्हेन टू स्टॉप. एक कंडीशन होगा, हम बार बार चेक करेंगे. अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गया, व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स, वी विल स्टॉप. एंड थर्ड एंड द फाइनल क्वेश्चन, the steps. What is step? It can be increment or decrement depending on which type of loop we have. यानी कि या तो वैल्यूज बढ़ेंगे या तो वैल्यूज कम होंगे, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लूप विच वी हैव. अमर फाइन, इसका एग्जांपल दो. I can give you a very relatable example and I would ask people whether they can relate to this or not. We are talking about none other than, if you remember, concept of hide and seek has a best example of loop. सर कैसे? याद है तुम लोग को क्या बोला जाता था? गो टू दैट वॉल, काउंट 1 to 50 होता था. अब 1 से 100 भी होगा भाई. आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज द स्टार्ट इन दिस. कहां से स्टार्ट करना था? कम ऑन पीपल, आई नीड योर हेल्प. कहां से स्टार्ट करना था? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन. कहां से स्टार्ट करना था? परफेक्ट, वंडरफुल. सो द स्टार्ट वाज 1. ओके. अब अगर मैं पूछूं एंड कंडीशन, व्हेन वी वर सपोज टू एंड, व्हाट वाज द एंड कंडीशन? Perfect.
50 was the end condition, तो I can say जब count equal to 50 हो जाए, stop. Another way of looking at this is till my count, sorry, my count is less than equal to 50. Continue. मतलब चलने दो भाई, तब तक चलने दो, कोई रोकेगा नहीं तुम्हें. Superb. And step. How would you count? 1 के बाद क्या आता था? Anybody? If you're counting, 1 के बाद क्या आता था? 2. Perfect. 2 के बाद? Perfect. Wonderful to see. 3. So you relate the step was plus 1. 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, 3 plus 1, 4, 4 plus 1, 5 and so on. यानी कि अपना पूरा स्टोरी एक सिंपल कॉन्सेप्ट पे चलता था, काउंटिंग, वर्किंग एंड ऑपरेटिंग. यहाँ से तुम्हारा बेसिक लूप चालू होता है. So when you talk about loop, there are three things we understood: the start condition, the stop condition, and the step. On basis of that, now get this thing very carefully. On basis of that, there are two types of loops. Now, mind you, I'm not talking about type of loops in for loop, while loop, and do while loop. I'm talking about type of loop in your head which you want to think. अमर मतलब, okay, there are two type of loops. एक जिसे हम लोग ट्रेडिशनली कहते हैं काउंटर. अमर ये काउंटर क्या होता है? यहाँ पे आप 1 से शुरू करते हो, आपका स्टेप प्लस के का होता है और आप n पे रुक जाओगे. So counter, it's like counting 1, 2, 3, 4. So for example, if I start counting right now, I can count. Currently, we are now 48 students currently attending the sessions. So ठीक है, तो I can go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So I'm counting. I'm counting from 1. I am incrementing the count in each pass and then go up. So that's exactly how we play with the system. दूसरा इससे उल्टा है जिसे कहा जाता है मेरे दोस्त काउंट डाउन. आई रिपीट, काउंट डाउन. I'll also break them more in detail, but again if I have to say count down कैसा है, इससे उल्टा दिखेगा. So count down, you start with some n number, you subtract as a step and you stop on 1 or 0. So this is technically called as count down. So if you see the bigger picture, याद है बहुत सारे जगहों पे तुम लोग काउंट डाउन करते हो. Go back to New Year. I mean 31st December night around 12 o'clock. याद है एक काउंट डाउन होता है. So people will go 10, 9, 8 and there will be a point will say Happy New Year. यहाँ पे काउंटिंग चालू हुआ n से 10, 9, 8. So every pass what was happening 10, 9, 8, 7, 6. So it was reducing. तो काउंटर कम डाउन. नाउ यहाँ पे ये सिखाने का एक मेरा रीजन है. लेट्स अंडरस्टैंड. इस केस में कुछ चीजें याद रखना. आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1 और 0 अप टू यू. यहाँ पे कंडीशन इंपॉर्टेंट है. इसका रैम्प देखो, यानी कि इसका स्टाइल, इट इज लेस देन इक्वल टू n. याद रखना. एंड जनरली आई प्लस प्लस होगा और आई प्लस के भी हो सकता है. नोबडी स्टॉप्स. Similarly, you also have a concept over here which says I would start from n. I would start from n. I. अब यहाँ पे और एक चीज देखने लायक है, इसका रैंप. यानी कि इसका रैंप उससे उल्टा है. Why, Amar? Why? Because we are going to use it. So we'll say till I is greater than equal to 0 or 1 depending on what is your condition. More important is I minus minus. So I is going to reduce. Amar, if you can elaborate what is this. Very good. मैंने कहा था ना, मैं जैसे जैसे आगे जाऊंगा I'll be starting teaching you important stuff at that time. तो चलो अब पहली बात तो शुरू करते हैं. Amar, what you have just done, I plus plus I, what was it? Okay. Here we need to understand increment decrement operator. What are increment decrement operators? So increment decrement operators are the way we write. So already आप देख चुके हो उसका एक basics. तो इनका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है. Instead of saying I is equal to I plus 1, I can very well say I plus plus. This is called post increment. Similarly, we also have an option called plus plus I, which is called pre increment. Amar, ये exactly है क्या? Post increment, pre increment. I'll explain more in detail. But similarly, सिर्फ बढ़ेगा थोड़ी, count down भी है ना. So instead of saying I is equal to I minus 1, you will be also can say rather I minus minus दो बार.
विच इज अगेन पोस्ट डिक्रीमेंट, यानी कि बाद में कम होगा, दैट इज बेसिकली a post decrement. I repeat, post decrement. This is called post decrement. See, you understand the word pre and post in this. You will understand why I'm emphasizing so much. Pre increment. Similarly, this is pre decrement. अमर ये pre के पीछे क्यों पड़े आप? Because it's gonna make a difference. So let's come back. मेरा ये बहुत प्यारा है, बीच बीच में जरूरत से पहले ऑन हो जाता है. So pre increment, pre decrement, post increment, post decrement. Now what is it about? Now this is very interesting for us. Try to understand this thing carefully. So when you tend to talk about it, ये जरा ध्यान से देखना. अगर मैं कहूँ x is equal to, let's say I'll give you complete example, I is equal to 10. Then I'll say int x equal to I plus plus. Or if I want to say int y is equal to I or rather plus plus I. तो हमारे दोनों का आंसर एक ही होगा? नहीं. यही क्वेश्चन तुम लोग को मैं वापस भी पूछूंगा. दिस दैट टाइम यू गाइस वुड हेल्प मी ऑफ. अगर 10 कहूं माइनस माइनस एंड माइनस माइनस, तो इस केस में इफ यू टेंड टू टॉक अबाउट द आंसर वुड बी x इक्वल टू, फॉर द फर्स्ट वन x इज इक्वल टू 10 बट I वुड बी 11. इस केस में x is equal to 11, I would also be 11. Now obvious एक क्वेश्चन आता है, अमर मतलब क्या रहा है? ये समझा प्लस प्लस से इंक्रीमेंट हो रहा है, माइनस माइनस से डिक्रीमेंट हो रहा है. परफेक्ट अमर. बट हाउ एग्जैक्टली आर वी प्लेइंग? नाउ लेट्स सी दिस वेरी केयरफुली गाइस. सो इन प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट, इन पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में होता है, असाइन पहले. यानी कि इस केस में first you will give the value and then you will increment the value. Okay, तो हमारे प्री में obvious है यार, it's gonna first increment the value and then gonna give the value. Oh, so that explains more in detail how it is gonna work. So पहले केस में अमर I का 10x में चला गया, perfect. उसके बाद I बढ़ा 11. So we got the answer which we can see on screen, x10 I 11. दूसरे केस में ऐसा नहीं है. तो इस केस में क्या हुआ? सिंपल, इस केस में पहले प्लस प्लस होके इंक्रीमेंट हुआ, ओके, और फिर वो कॉपी हुआ. पीपल क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? व्हाट आर वी वर्किंग विद? इज एवरीबॉडी क्लियर? यस, नो, वेटिंग, बिकॉज दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट विद रेफरेंस टू लूप्स. Perfect, wonderful, good to see. Okay, now see, I'll go one more time. Let's understand. I'll go slow, perfectly okay. Now this is called post increment, this is called pre increment. पहले वो दिमाग में डालो. पोस्ट में क्या होगा? पहले जो वैल्यू है वो मैंने x में कॉपी कर ली, यानी कि I 10 था, पहले मैंने कॉपी किया तो 10 बना, फॉलोड बाय इंक्रीमेंटिंग I by 1. सो x बिकम 10 बट I बिकम 11. इस केस में हम लोग कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, यानी कि इसमें पहले इंक्रीमेंट हुआ, यानी I 10 से 11 हो गया और वो 11 मैंने y में कॉपी किया. सो माय बैड, पहले तो यहाँ y आएगा, x नहीं, दैट आई एक्सेप्ट. बट द कोर कॉन्सेप्ट रिमेन्स सिमिलर. अब क्लियर हुआ? वरद, क्लियर दोस्त? अंडरस्टूड व्हाट आर वी प्लेइंग विथ? Perfect, wonderful. See, I would consider this as a better option, guys. नहीं समझा तो please write, sir, one more time. I don't mind explaining. That is the reason I'm taking this live lecture. वरना पूरा मेरा course ready, I can just say go and watch that course. So be very, very careful with this. Now it is your turn, guys. Let's see कितना का दिमाग चल रहा है. Anybody could give me answer for the bottom ones? So sorry. Give me answer for the bottom ones. Tell me x क्या होगा, I क्या होगा. Tell me y क्या होगा, I क्या होगा. You guys tell me. Come on. This is decrement. Decrement मतलब कम होगा, but post and pre में फर्क है. तो I want to see whether you guys understood or not. ओहो, smart, good to see. Okay, तो पहले वाले में x और I क्या होगा, दूसरे वाले में y और I क्या होगा. चलो, tell me that way. Good Bharat, good job. So more or less, if we tend to understand, sir देखो आपने समझा उस हिसाब से हम लोग करते हैं. ओके, इस वाले में पहले आप कॉपी कर लोगे, परफेक्ट, फिर डिक्रीमेंट करोगे, परफेक्ट,
यानी कि सर x में तो 10 जाएगा बट ये 10 से 9 हो जाएगा। परफेक्ट। इस केस में पहले कम होगा, यानी अमर जो 10 था वो 9 हो जाएगा और फिर मैं कॉपी करूंगा, यानी ये भी 9 होगा। सो 10 9 9 9। Perfect. Everybody clear with this? This is called increment decrement. Everybody clear? Let me get a round of yes. Come on, come on, come on. I'll see you. Give me yes if you're clear with this. Come on. Wonderful. So बहुत कम लोग yes बोल रहे हैं, but बाकी के लोग hopefully I'm hoping that they are watching also. So ठीक है. So we are considering this as a reference. Sir, एक से ज्यादा या दो तीन ऐसे कुछ देना है तो क्या कर सकते हैं इसमें? ये कुछ नहीं कर सकता, but then there is an option called shorten operator. I repeat. If increment decrement is beyond 1, then you can use shorthand operator. अब सर ये क्या है? मैंने इसलिए कहा ना, सी थिंग्स विल नॉट बी इम्पोर्टेंट अनलेस यू नो वेयर दे आर यूज्ड। ये मेरा तरीका है, इसलिए मैं एक एक करके चीजें सिखाते रहता हूँ जिससे कि यू अंडरस्टैंड वो कॉन्सेप्ट्स के साथ। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। अमर ये क्या है? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। इंस्टेड ऑफ सेइंग x इज इक्वल टू x प्लस 1, हाँ सर वो आता है, अभी आपने सिखाया इसे बोलने का ना, x प्लस प्लस हो गया। There is another way also saying, instead of writing x is equal to x plus 1, I can have a shorthand operator. तो ये तो तुम्हारा था increment operator. You can also write it this way, x plus equal to 1. This is called shorthand operator. अमर ये shorthand operator का मतलब क्या है? इट्स अ, जैसे व्हाट्सएप पे तुम लोग नॉर्मल इंग्लिश लिखते हो क्या? आई एम वेरी श्योर वी डोंट राइट नॉर्मल इंग्लिश, हम लोग शॉर्ट फॉर्म्स में लिखते हैं। ओके, टीसी, एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज टीसी? हम लोग व्हाट्सएप पे लिखते हैं ना, एनीबडी? अरे तुम लोग को भी नहीं मालूम व्हाट इज टीसी गाइस? बाय द वे गाइस, व्हाट्सएप पे हम लोग लिखते हैं ना। परफेक्ट। थैंक यू देवेश्री, थैंक यू सार्थक, थैंक यू उत्कर्ष। ओके, सो ये एक शॉर्ट में लिखने का तरीका है, बैंग ऑन। हम लोग के पास कोडिंग में भी शॉर्ट में लिखने का तरीका है कॉल्ड शॉर्ट एंड ऑपरेटर। तो सर ये तो एक ही हुआ नहीं, इफ आई वांट x टू इंक्रीमेंट बाय 2, so instead of writing this I can very well write in a shorthand operator x plus equal to 2. It's very very simple. So now you guys again will help me. अगर मुझे x is equal to x minus 10 बोलना है, इसे शॉर्ट हैंड में मैं क्या लिखूंगा? लिख के भेजो। इसे मैं शॉर्ट हैंड में क्या लिखूंगा? पीपल हेल्प मी ऑफ। इसे शॉर्ट हैंड में मैं क्या लिखूंगा? कम ऑन, आई वांट अ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, कम ऑन। देवश्री गुड, सार्थक गुड जॉब, वेटिंग फॉर अदर्स। बस ये दो ही को आंसर आता है क्या रे? कम ऑन पीपल, वंडरफुल वंडरफुल। चलो, सो वी डू अंडरस्टैंड अमर, इट्स वेरी सिंपल, x इज इक्वल टू 10 लिख दो सर, वो हो जाएगा, बुलजाय। तो नाउ दिस वाज शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। और एक काम अगर कर दूं, अगर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर सीख ही रहे हो तो लेट मी सी हाउ मच यू कैन इवैल्यूएट दिस वे। सो इफ आई से a इज इक्वल टू 10, या चलो छोटे वैल्यू लेते हैं 1, b इज इक्वल टू 0, c is equal to 3, and there is a d. Okay sir, fine. Now what's the point? D is equal to, mind you, plus plus a plus 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 b into c minus minus. Anybody could give me answer for this equation? कैसे सॉल्व करना मैं दिखाऊंगा, बट तुम ट्राई करो तुम्हारे हिसाब से। दो प्री इंक्रीमेंट है, एक पोस्ट डिक्रीमेंट है। डी का वैल्यू क्या आएगा? आई वांट ए बी सी डी एवरीथिंग, आई वांट ए बी सी डी एवरीथिंग। ए का क्या आएगा, बी का क्या आएगा, सी का क्या आएगा, एंड फाइनली डी। So Varad has given an answer as 2, waiting for others. A1, okay. सोच लो, प्लस प्लस है। Come on people. Sudiksha says 5. Punat says 5 again. ABCD को क्यों भूल, ABC को भूल गए, D सीधा आ गया। ABC क्या आएगा? Come on. Think.
Come on, people. Come on. Okay. Interesting. A1, B0, C2. Chalo. Chalo. Good, 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 good. For the people who are finding it difficult, let me start. ध्यान से देख लो, समझ लो. सो पहले केस में जब हम लोग बोले प्लस प्लस ए, पहले ये 2 होगा एंड यू विल टेक 2. प्री है ना, प्री इंक्रीमेंट है. प्लस अमर प्लस प्लस बी, ये 1 होगा, आप 1 लोगे. अब इनटू सी माइनस माइनस है अमर, तो हम लोग 3 ले लेंगे, फिर इसको 2 कर देंगे. सो आंसर फॉर ए बी सी इज 2 1 2. नाउ लेट्स सॉल्व दिस. दिस इज बोडोमस रूल, वही अपना जुना. तो अमर 2 प्लस 1 इंटू 3 में पहले इंटू 3 होगा, मल्टीप्लीकेशन हैपेंस बिफोर. परफेक्ट. सो इट इज 2 प्लस 3. सो द फाइनल आंसर 5. एवरीबडी क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? समझा? एबीसी का कॉन्सेप्ट समझा? खास करके एबीसी का कॉन्सेप्ट समझा? एवरीबडी क्लियर? परफेक्ट. वंडरफुल. चलो, गुड टू सी. Okay, so it's very simple. I again repeat, ध्यान दो, people pay attention to this. So for pre-increments, you will be first incrementing value to 2 and use that value over here. Plus plus b. So b का value 0 था, incremented to 1 and this became 1. Followed by into c minus minus. You will take 3 as a value, but then you will decrement this. Post है ना, तो बाद में decrement होगा. Then it is a mathematics. 2 plus 1 into 3. तो पहले into होता है, तो 3 आ गया. 1 into 3. 2 plus 3 is 5. Clear? Everybody clear? Shrank? Clear हो? चलो, wonderful. Wonderful. Good to see. चलो और एक करते हैं. अगर ये समझा है तो अच्छी बात है. Well and good. मैं हूं ना, अपने पास बहुत ऑप्शन है. So let's try to play on this. So let's get int x. So we have a equal to, be careful, minus 1. B is equal to 4. C is equal to 2. Okay. So x is equal to a minus minus plus minus minus b into प्लस प्लस सी. ए बी सी और एक्स तीनों चाहिए मुझे. ए बी सी और एक्स तीनों चाहिए. हाउ वुड यू वर्क? कम ऑन. इट्स नॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट हाँ, हाउ वुड यू वर्क विद दिस? दैट्स अ क्वेश्चन. कम ऑन पीपल, गिव इट अ ट्राई. Come on, come on, come on, come on. Give it a try. I want A, B, C, and X. Okay. Kanav gave answer as 9. Anand also says, Anand says 8. Varun says 8. Sutiksha says 10. स्वराज says 8. ये भाई मैं सब्जी खरीदने आया, मतलब अलग अलग रेट मिल रहा है. 8 का ले लो, 10 का ले लो, 9 का ले लो. मतलब it has to be one answer. End of the thing, there is one equation which we are talking about. Okay, 8 seems to be constant. Come on, come on, come on. More people, more people. I want more people. Oh, -1, -3, 3, and -10. Okay, interesting. Again, 8, 8. Chalo, it's time where I start. Chalo, देखते हैं. So, when you tend to work with this, let me play. तो अमर a माइनस माइनस है, तो पहले तो -1 लेगा. अमर माइनस माइनस का -1 का माइनस माइनस, आई मीन बहुत सारे माइनस हो गए, बट अगेन -1 में -1 डालोगे तो क्या आएगा मेरे दोस्त? -2 आएगा. डू नॉट फॉरगेट. फिर प्लस अमर माइनस माइनस बी है. इट इज प्री, यानी कि ये 3 होगा और वो 3 तुम यूज करोगे. इनटू अमर प्लस प्लस सी प्लस प्लस, और वो 3 तुम यहां यूज करोगे. अब यहां मैथ्स के हिसाब से +3 into 3 is 9, followed by -1 plus 9 is 8. 8 is the right answer. Everybody clear? Everybody clear?
सी अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हेन आई से माइनस माइनस, संभाल के, माइनस को माइनस करोगे तो नेगेटिव बढ़ेगा. सो माइनस माइनस वन टू दैट इज -2. यहाँ पे गड़बड़ होता है. एवरीबॉडी क्लियर? आप समझा क्यों सिखाया? बी वेरी वेरी केयरफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल विद दिस. सो आई फील पीपल आर क्लियर. चलो, वंडरफुल वंडरफुल. चलो, एनी डाउट, एनी क्वेरी अप टिल नाउ? ये समझ गया सबको? एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? Had a concept clear? चलो, give me round of yes if people are clear. Come on, जल्दी. Then we can move ahead. Don't forget, ये loop में शुरू हुआ है. ये मैंने ऑपरेटर दिखाया जो काम किया है. Again I'll go back to loop. अरे, very simple. See, negative part it's maths मेरे दोस्त. I'll tell you one simple way. See this way. If a was -1 and you do -1 to that, this becomes -2. Exactly is the idea. If we say a followed by minus minus of it, ultimately we are doing this only na, that a is -1, उसमें -1 डालोगे तो -2 आएगा. That is how we work. अब समझा? कोर कॉन्सेप्ट समझा? देवश्री क्लियर विद दिस? वंडरफुल. सी गाइस, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, आई लव दोज किड्स हु आर डायरेक्टली आस्किंग सर ये नहीं समझ रहा. दैट इज द रीजन. वरना मेरे पास ऑप्शन है चैट ऑन ऑफ करने का. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई ऑफ दिस, अब तुम लोग को चैट दिखेगा ही नहीं. तुम ट्राई भी करो, यहाँ पे चैट आएगा ही नहीं. सो आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई कीप इट ऑलवेज ऑन सो दैट यू गाइस कैन गिव इट. ये भाई टेस्ट कर लो, ऑन हुआ है ना? हाई डालो जरा कोई. ऑन हुआ है चैट? मैंने दिखाने के चक्कर में. ओके, चलो. Okay, thank you, people. Okay, Shuan says, sir, can you explain about the B part? I think B, what you are asking for. Chalo, give it a try. So now when you talk about B, don't forget, B में negative दिया है ना? So if we tend to, I'll just clear out few things. Just a minute. So come here again. चलो, पूरा एक बार दिखा रहा हूँ. People, please pay attention to this. So when I say A minus minus, first I'll be taking -1. I'll be going over here and making it -2. First concept. Second, it is pre. Pre मतलब पहले. पहले मतलब ये पहले ऊपर जाएगा. 4 का माइनस करेगा. 4 minus minus is 3. So that becomes 3. Followed by plus plus 2. यानी कि ऊपर जाएगा, प्लस करेगा, 3 करेगा और वो 3 अंदर आएगा. इनके बीच में ऑपरेटर्स है. So we get -1 plus 6. Sorry, my bad. 9, and finally -1 plus 9 is 8. अब क्लियर दोस्त? Trians clear? पंडा समझा? Perfect. चलो. So now don't forget, coming back to this, so we tend to use increment or decremental examples, or rather increment or decrement operators with the loop. Okay, काउंटर 1 से n जाएगा, काउंट डाउन n से 1 आएगा या 0 पे आएगा, डिपेंड ऑन इट. बट हाँ, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए तुम्हें ये समझाना कि भाई उनके रैंप शेप्स देखो, वही सिंबल तुम यूज करते हो, वही सिंबल तुम यूज करते हो कंपैरिजन में. उसी तरह इसका भी रैंप देखो. So that's the exact symbol you are using over here. Be careful. Be very very careful. Okay. यहाँ तक समझा? Should we go ahead? People, give me a round of yes so that we can move ahead. Come on. Come on, people. यहाँ तक clear हो? Come on, people. Wonderful. चलो. So now when we talk about loops, there are 3 type of loops which we have. इसके notes as usual तुम्हारे section में आ चुके हैं, तुम्हारे classroom में डाल चुका हूँ. So there are 3 type of loops. 3 type of loops. First, for loop. Second, while loop. Third, do while loop. Sir, 3 क्यों बना के रखे? हर एक का अपना एडवांटेज है. For loop, simplest, maximum use with array, string, pattern and series. इन चारों में for loop use करते हो. I again repeat myself. For loop is the simplest. For loop is the simplest. It is maximum use with topics like array, pattern printing, series printing. उसमें भर के तुम for loop ही use करते हो. सर ये सब क्या है? आगे आएगा. Array आएगा. Array पे एक lecture होगा. Patterns पे होगा. String पे होगा. So you'll be doing that. Do not worry about it. Going further with that. Going one step further,
Now, when you talk about while loop, what is while loop doing and how we work with the while loop, how we work with the concept of while loop. Okay. Excellent for number based problem like dividing digit, anything to do with digit of a number, then while loop is the best option. तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है. Dividing digit, extracting digit, तो while loop से better तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. So be very very careful. Bharat will give you, don't worry. So I'll give you all, don't worry. So as you go ahead, what is a do while loop? Okay, do while loop is pretty useful. Majorly used for menu driven code. Mind you, this all type of codes I'm going to teach you, don't worry. Menu driven मतलब one बोले तो ये करना है, two बोले तो ये करना है, three बोले तो ये करना है, मेन्यू दिखेगा and you can actually use that. Gamification, यानी कि कोई गेम्स बनाने में सबसे ज्यादा डुअल लूप यूज करते हैं हम लोग, बिकॉज वी आर नॉट सो श्योर यूजर क्या इनपुट देने वाला है. सो बी वेरी वेरी केयरफुल. इट इज प्रीटी इंटरेस्टिंग एंड टू वर्क विद. ओके, सिमिलरली आई विल आल्सो गेट यू द लिंक if you haven't got the link. Just a minute. ओके भाई, लिंक यूज किया करो, उसमें तुम्हारा बहुत सारा मटेरियल है. असाइनमेंट भी उस पे आएगा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी उसी पे आएंगे. ओके, आई विल आल्सो गिव यू फ्यू स्टूडेंट्स वे आस्किंग सर यूट्यूब पे आपके वीडियोस देखे. फाइन, आई विल गिव यू द 1 hour सी वर्कशॉप. तो अगर आपने पहले से अटेंड नहीं किया एंड यू वांट टू, यू कैन गो थ्रू दैट 1 hour. दैट्स अ काइंड ऑफ अ फास्ट ट्रैक वेबिनार व्हिच वी टुक अर्लियर. उसी का रिकॉर्डिंग है, सो यू गाइस कैन यूज दैट टू रेफर फ्यू थिंग्स. जस्ट अ मिनट, आई एम गिविंग यू क्लासरूम. Guys, link is in the chat. You guys can go through with that. Okay, so currently वापस आते हैं भैया. मेरे पास 3 लूप है. तो फॉर लूप है, while लूप है और डू while लूप है. फॉर लूप सिंपलेस्ट है, मैक्सिमम यूज होता है, एरे में यूज होता है, स्ट्रिंग में यूज होता है, स्ट्रिंग पैटर्न्स में यूज होता है. while लूप डिजिट एक्सट्रैक्शन, डिजिट बेस लॉजिक्स पे सबसे ज्यादा यूज होता है. और डू while लूप majorly used in menu driven code. Majorly used in menu driven code. So that is what you are supposed to do. Be very very careful. ओके, एक एक करते हैं, एक एक काम करते हैं. आज फॉर लूप के पीछे पढ़ेंगे थोड़ा, सो दैट वी हैव अ क्लियर कट आइडिया व्हाट इज हैपनिंग. हर एक का एक एक एग्जांपल दिखा दूंगा सो दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग लूप. फिर आई विल स्टार्ट टीचिंग यू व्हाट इज मेन्यू ड्रिवन कोड, हाउ टू डिवाइड नंबर. इनके पे चालू करेंगे. जैसे मैंने कहा था 2 लेक्चर्स मैं सिर्फ लूप पे काम करूंगा. आज का लेक्चर भी जैसे मैंने कहा था भाई थोड़ा लंबा होगा, बिकॉज ऑब्वियस विल बी टॉकिंग मोर थिंग्स इन डिटेल. सो करंटली लेट्स गो अहेड. सो टॉकिंग नेक्स्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर लूप. अब फॉर लूप चलता कैसे है? ओके, सो फॉर लूप जैसे कहा बहुत काम का है, बट फॉर लूप लिखने का एक तरीका है. फॉर, यू विल से स्टार्ट सेमीकोलन followed by condition semicolon followed by step. This is simple for loop. Sir, एक मिनट, what do you mean by simple for loop? That is also advanced for loop. पहले सिंपल कर लो, फिर बाकी का करते हैं. डोंट वरी, आई विल गेट इट डन टुडे इटसेल्फ. अमर जरा समझाओ ना. ओके, अगर मैं कहूं print 1 to 10, print 1 to 10, you need to give me 3 answers in this. What would be my start, what would be my condition and what would be my step? People, ये तीनों चीज लिख के भेजो. स्टार्ट क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, स्टेप क्या होगा. कम ऑन, लेट मी सी हाउ मेनी गॉट दिस. 1 से 10 प्रिंट करना है मुझे. 1 से 10 प्रिंट करना है. ओके, सो स्टार्ट इज 1, एग्री. कंडीशन, कंडीशन, think. Condition, that is step, not a condition. कंडीशन क्या दोगे? 10 पे रुकना है. ये काउंटर है. काउंटर लिखने का एक तरीका सिखाया था. गुड फराज, गुड. Panad, good job. Good. ओके, चलो, गुड टू सी. अच्छा, स्टेप क्या होगा? +1, तो प्लस प्लस लिखूं या माइनस माइनस लिखूं? देवश्री, गुड टू सी. चलो, गुड. सो नाउ आई अंडरस्टूड. हमें स्टार्ट 1 से करना है, 10 पे रुकना है. 2 तरीके लिखने के. I less than equal to 10 लिखो. I personally love this. कुछ बुद्धिजीवी ऐसे लिखते हैं, रॉन्ग नहीं है. इट्स हाउ यू सी. सो अगर मैं कहूँ I equal to 1 is the start. कंडीशन, I personally prefer this. I personally prefer this because उसमें सोचना नहीं पड़ता, जो है वही लिखना पड़ेगा. 11 लिखोगे तो हाँ, it's +1 less than, that is how you see. And step is obvious, I++. हैं, ये क्या हुआ? What happened?
मेरा कीबोर्ड लेआउट चेंज हो गया है, 1 मिनट दो, मैं इतना शुद्ध हिंदी में प्रोग्रामिंग नहीं सिखा सकता, सो बैड। सो आई प्लस प्लस, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, थैंक गॉड। सो अमर, ये फॉर लूप लिखोगे कैसे? कुछ नहीं, मैं पहले यही कॉपी करता हूँ एंड देन एज फ्यू ऑफ यू ऑलरेडी डन, लेट्स ट्राई टू पुट इट। सो एक एक चीज करते हैं। सो आई इज इक्वल टू 1, वहां से चालू करेंगे। अमर कंडीशन लिखा है ना, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई पर्सनली लाइक दिस, लेस देन 11 नॉट रॉन्ग, आई प्लस प्लस। और उसके बाद चालू होगा जिसे आप कहते हो कोड ब्लॉक फॉर लूप। व्हाट डू यू मीन बाय कोड ब्लॉक फॉर लूप? भैया ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो भी लिखो वो सब फॉर लूप में आएगा, वो n टाइम्स रन होगा। नाउ आफ्टर ऑल दिस वी ऑब्वियसली वांट टू नो कि अमर हाउ वुड यू कोड, बट बिफोर आई कुड गो अहेड, यहां तक सब क्लियर हो? इज एवरीबडी क्लियर टिल दिस पॉइंट? पीपल क्लियर? come on, I would love to see group of yes coming in. Wonderful, chalo, good people, good. So now as we go ahead, chalo ab thoda coding pe uttarte because ultimately that is why we are here for. So chalo, here goes. So now if I work with, we are back to the coding screen, ye tum log ko अच्छे भली भांति इसे जानते हो. So let's go to save as. We'll be talking about for loop 1. So let's call it for loop 1. कुछ चीजें ऑब्वियसली चेंज कर देंगे. Printing 1 to 10 using for loop, it's not going to do out of the world job, it is not going to do out of the world. So let's say अमर क्या करेगा, ये सब मोह माया छोड़ दो, सब मोह माया. यहां से चालू होगा i इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 1. सर ओके, i इज इक्वल टू int i बोल दो. अब चालू करो फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस. और इसके नीचे नाउ यू विल से printf गोइंग विथ, अगर आपको नीचे प्रिंट करना है तो स्लैश एन लिखोगे, नीचे नहीं प्रिंट करना, एज इट इज प्रिंट करना है तो यू कैन जस्ट से परसेंटेज डी. सर वाई परसेंटेज डी? आई इंटीजर है, कॉमा कॉमा आई, एंड योर जॉब इज डन. सर ये प्रिंट कर लेगा? अरे आराम से. सो इफ आई रन दिस, it has successfully printed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So how it works. Okay, now if we have to work with this, you guys help me off somehow. I want to print also one more thing. This is to, let's print this way, printf slash n print 1 to 10 slash n again to go down. ये एक था. अब ऑब्वियस है इंजीनियरिंग के कीड़े मुझ में भी है, तुम लोग में भी है. व्हाट इफ अमर आई हैड टू प्रिंट 10 to 1? Anybody could give me changes in this. क्या चेंज करना पड़ेगा? Come on, waiting. क्या चेंज करना पड़ेगा? Waiting. Not out of the world, you guys can do it, but how? That's one question. चलो गुड उत्कर्ष, चलो एक एक पूरा लाइन लिख के भेजो. नहीं अमन, कंडीशन रॉन्ग है. फनंदी आई माइनस माइनस बराबर है देवश्री I1 नहीं. चेक द इनिशियल कंडीशन, इसीलिए तुम लोग को डाला है. जैसे मैंने सिखाया है, व्हाट इज स्टार्ट, व्हाट इज कंडीशन, व्हाट इज स्टेप, ये खुद को पूछो. गड़बड़ कर रहे हो, इसीलिए मैं टाइम दे रहा हूँ. कम ऑन थिंक. इट्स नॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड बट इट इज इंटरेस्टिंग. थिंक थिंक थिंक. चलो, good to see, good to see. Okay, my turn. So when you work with pretty good, धीरे धीरे लाइन पे आ रहे हो. हाँ, पहली बार है तो गड़बड़ करोगे. तो my turn. तो अमर देखो, स्टार्ट 10 है, सो आई 10. ये काउंट डाउन है, सो ग्रेटर देन इक्वल टू लास्ट वैल्यू क्या है? 1. ग्रेटर देन इक्वल टू 1 द लास्ट वैल्यू. आई कम हो रहा है सर, माइनस माइनस.
Your job is done. So if I run this, you will see both. So you could practically see Amar 1 to 10 आया बराबर 10 to 1 भी आया बराबर. Is this concept clear to everybody? Is this concept clear to everybody? सबको समझा कोर कॉन्सेप्ट? अब समझा मैंने काउंटर काउंटडाउन लेस देन और ग्रेटर देन क्यों सिखाया? I feel everybody is clear with this. Crystal clear? चलो, wonderful. Good to see you guys. Wonderful. Good. चलो, now my turn again. मतलब सर सही है ये. हाँ सही है. इसका बहुत सारा काम तुम कर सकते हो. बहुत सारी चीजें तुम लोग को आती है. अब अमर 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 यूजर से नंबर लिया और 1 से n किया तो परफेक्ट. So that's exactly what we are going to do for loop n. What is the plan, sir? Okay, print 1 to n. So we'll be modifying few things. To n, where n is given by the user as a positive number. So sir, question क्या है? You're gonna print 1 to n, where n is given by user as a positive number. Very simple. सिखा रहा हूँ, ध्यान दो. तो सर n यूजर देगा मतलब सर वेरिएबल बनाना पड़ेगा. वेरी गुड. सिर्फ इतना ही नहीं, यूजर से लेना पड़ेगा. So we'll say /n enter n. आपको n लेना पड़ेगा यूजर से. So we'll say enter n. फिर scanf for taking the data. Since it is integer, %d. Since it is scanning and n, address of n पे जाके स्टोर होगा. परफेक्ट. अब ये अगर तुमको प्रिंट करना है 1 to n, %d दो, बाहर जाओ, कॉमा n लिखो. सर इससे क्या होगा, इससे क्या होगा? सो अगर n आपने 5 बोला है तो 1 to 5 प्रिंट करेगा. n आपने 10 बोला है तो 1 से 10 प्रिंट करेगा. बी वेरी वेरी केयरफुल. तो एक सर सेकंड थोड़ा नीचे लेके जा सकते हैं. हाँ, आई इक्वल टू, चलो इस बार मैं ऐसे प्रिंट कर रहा हूँ रादर देन डूइंग एनीथिंग. थोड़ा स्पेस देके करते हैं अच्छे से. तो अमर ये रुकेगा कहाँ? 1 to n, यानी कि लास्ट कंडीशन n है बराबर. सो लेस देन इक्वल टू n. n विल बी द नंबर यूजर इज गोना गिव. अगेन ये वाला लूप तुम लोग बोलोगे जो n से 1 का होगा. मैं सिर्फ इतना दिखा रहा हूँ. तो फिलहाल मल्टीपल लाइन कमेंट्स करने के लिए तुम /* फॉलोड बाय */ काम हो जाएगा तुम्हारा. अब मैं ये रन कर रहा हूँ, जरा देख लो. सो नाउ आई एम आस्किंग एंटर n. आई से 7. 1 to 7. 1 2 3 4 5 6 7. 10 to 1 वो मेरे पास नहीं है, अभी तक नहीं है. तो हाँ, मैं एज अ नो हेल्प मैं हूँ ना, टेंशन मत लो. मैं बोलूंगा ना, तुम ये करोगे, यहाँ पे %d डालोगे, यहाँ पे कॉमा n डालोगे. ये मैं करके दे रहा है, बाकी का काम तुम लोग संभालोगे. तो सर इससे क्या होगा? n को कोई भी एक नंबर ले लो. सपोज मैं बोलता हूँ 9. सो आई डिड गॉट 1 to 9. 1 2 3 4 9. 9 to 1 तुम्हारे हवाले होगा. बट मोर देन दैट, इज एवरीबडी क्लियर विद द वे आई वर्क? ये कॉन्सेप्ट समझा सबको? इज एवरीबडी क्लियर? ये समझा? इज एवरीबडी क्लियर विद दिस? Come on people. Be honest to yourself, be honest to me. Believe me, programming is fun. No? ये तो सिर्फ सी है. हम लोग जब पाइथन लेते हैं या जावा जैसी कुछ चीजें लेते हैं, इट्स फन बिकॉज वी क्रिएट रियल लाइफ एप्लीकेशन. तुम लोग को भी आएगा. ओके, सो द कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी सिंपल. हाउ वी वर्कड, हाउ वी ऑपरेटेड, जरा ध्यान से समझो. तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना हिस्सा ले लेता हूँ जिससे कि मैं वो समझा पाऊँ तुम लोग को. सो पीपल, लेट्स गिव इट अ शॉट. सो हियर गोस. Just a minute. So let's take it to our open board. Okay, so let me get you a new thing. So भैया ये तुम्हारा कोड था. अब यहाँ पे कोड चला कैसे, क्या हुआ, किस तरह से हुआ? लेट्स ब्रेक इट डाउन इन 2 पार्ट्स. सो यूजर ने ये अभी तो नहीं चाहिए मुझे, तो ये हटा देते हैं. सो यूजर ने क्या किया? यूजर स्टार्टेड विद अ वेरी सिंपल फिनोमेना. यूजर ने आपको पहले स्क्रीन पे बोला एंटर n. अब आपने n बोला तो आपने शायद दिया है 3. तो वो यूजर से लेके आपने n is equal to 3 स्टोर कर दिया. Okay, that is what happened in a very simple layman's language. This is exactly what you work. अब उससे आगे क्या हुआ, स्टोरी कैसे चला, किस तरह से हम लोग ने कॉन्सेप्ट निकाला. अब यहाँ पे i जो आपने दिया था that was 1. So I was given was 1. 1 is less than equal to 3. हाँ, तो ये पहले यहाँ जाएगा
यहां से यहां चेक करेगा, एंड सिंस द कंडीशन इज ट्रू मैं अंदर आऊंगा, आई प्रिंट आई इज इक्वल टू 1। अब मेरे दोस्त यहां से मैं ऊपर जाऊंगा और 1 का होगा 2। बी केयरफुल। So 2 is less than equal to 3, yes. So I went in again after checking the condition and I printed I is equal to 2. After that, I again went up. Again, at this case, I plus plus happened. So this became 3. So this became 3. वापस लिख देता हूँ थोड़ा यहाँ पे, ये 1 था. This became 3. Okay, Amar. So in that case, 3 is not less than, but it is equal to 3. Condition ना, तो ये condition भी valid था. आप नीचे आओगे. So you printed I is equal to 3. When you went in for the next round, be very, very careful now. Because when you went, this became 4. This became 4. 4 is not less than equal to 3, which was given. So you stop. यानी कि उस टाइम पे आप बाहर आ जाओगे यहां से निकल के. अब समझा सबको? Clear with the concept? Varat, clear हो? Everybody clear with this? People, clear? Wonderful. Chalo. Good to see. Okay. So this is how loop works. And now you guys are very smart, very cute people. You know what is the next thing which I want? Simple. I want you guys to make me change in this particular thing which will print n to 1. क्या change करोगे, कहाँ करोगे? You guys start. Prasanna was ready with the answer. Very good. Good to see. Varun is also. चलो क्या बात है. Good to see you guys. Good. Waiting for others. Waiting for others. Come on. Come on, people. Come on. Perfect. I is equal to n. I is greater. चलो क्या बात है. So people understood. I consider that. So अमर simple है. n से चालू होगा. Okay. Then अमर ये काउंट डाउन है तो वही आएगा ना, सिंबल तो वही आएगा सर. बराबर है. रुकना कब है? 1 पे. आई माइनस माइनस है. बस सर एक ही तो चेन था यार. हाँ बट वो एक चेन ट्यूब चमकनी चाहिए आपकी. So now if I talk about 4. So one printed 1, 2, 3, 4. Another printed the usual style 4, 3, 2, 1. We got both the answers in a very simple manner. That's how we work. अगर उसी स्टाइल में प्रिंट करना है, do not worry. We can simply do this, and we can have an answer. तो अब दोनों प्रॉपरली दिखेंगे तुम्हें. तो अगर मैं कहूँ n is equal to 5, 1 to 5. So you have 1, 2, 3, 4, 5. 5 to 1. 5, 4, 3, 2, 1. Worked in a very simple manner. Everybody clear? फंडा समझा? Everybody clear? Okay. Third case में जाते हैं. See, loops are gonna be always interesting. So let's say save. This time we'll be talking about start to end. Amar, what do you mean by start to end? Okay. Print start to end, where start and end both given by the user. Both given by the user. इतना ही नहीं. Only condition is start should be less than end. ये condition है. मतलब start should be less than end मतलब सर वही ना, आपका start should be less than the end. Right, that's the only condition allowed. तो अब तुम सोचो क्या क्या करोगे. मतलब सर देखो, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां पे एंड करेंगे. आई प्लस प्लस होगा. परफेक्ट. स्टार्ट और एंड नहीं है तुम्हारे पास. ओके तो सर ले लो. स्टार्ट दो, एंड दो, एंटर, स्टार्ट, एंड एंड. नीचे जाने दो, स्लैश एन. यहां पे एक्सेप्ट करो. दो एक्सेप्ट करना तो परसेंटेज डी एंड स्टार्ट एंड दोनों आ गया. परफेक्ट. स्टार्ट टू एंड तुम्हारा काम खत्म. मस्त काम. चलो इतना हो गया. सो इफ यू रन दिस, नाउ इन दिस केस आई हैव टू से प्रिंट परसेंटेज डी टू परसेंटेज डी. फर्क क्या आएगा? स्टार्ट स्टार्ट पे बोलेगा, एंड एंड पे बोलेगा. और अब भैया अपना काम चालू. स्टार्ट टू एंड तो मैं बोलूंगा 3 and 9. श्योर
कुछ नहीं हुआ है क्या? ये तो बंद हो गया। हाँ, तो लेट्स गो डाउन एंड सी। तो आपने आई स्टार्ट से चालू किया, बराबर है। एंड सर, स्टार्ट और एंड लिया आपने, परसेंटेज डी से लिया है, प्रिंट किया है, बट वो चल क्यों नहीं रहा है? चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई अगेन। स्टार्ट एंड एंड तो दिया है मैंने। सो आई से 3, आई से 5। There's some programming bug on my side. Nothing in terms of wrong or right. ये programming bug है. I'll again reset the thing. Just a minute. Saving it. Recompiling the environment and recompiling the code. Considering 4 and 6. कुछ तो गड़बड़ है. मेरे compiler में गड़बड़ है. It's not that your code is not running. Give me a second. I'm saving this. Just a minute. I'll just close it and start again. बहुत बार होता है, प्यारी चीज़ है. Just a minute. I'm just closing it. Restarting. Okay. Okay, chalo. Started more or less. Here goes. Okay. पर वापस एक बार स्टार्ट करके देखते हैं, रन करके देखते हैं क्या है. So if we work with start is 2, end is 7. Something is wrong on a compiler. Do not worry. So print 227, 2, 3, 4, 5, 6, 7. मेरा काम हो गया. The code runs without any problem. The code runs without any need. It works very superbly, very normally. ये सबको समझा? Everybody? Is everybody clear with this? कॉन्सेप्ट समझा? ये कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, क्यों ऑपरेट कर रहे हो? Is everybody clear? Wonderful. You know what I'm going to ask now. So what if we want to print? Let's change this to another question. Save as. We'll go with C file. शायद मैं CPP में सब स्टोर कर रहा हूँ, देखते हैं. You're supposed to print start to end only, sir, but this time it would be that start would be. So this is basically negative loop. क्या क्या चेंज करोगे तुमको मालूम. Everybody clear with the question? Example चाहिए तो समझो. This time start would be, let's say 5, end would be 2. You will be printing 5, 4, 3, 2. That is what you are doing. What changes, where changes, you guys know better than me. करो, मुझे लूप दो, मुझे लूप दो. सिंपल सा फंडा है. मुझे लूप लिख के दो, क्या लिखोगे? कम ऑन. हार्डली चेंज है, बट फिर भी आई वांट टू सी. कम ऑन पीपल. think. Come on. सोचो. क्या बात है. गॉट द पॉइंट. गुड. चलो, दो जन ने तो समझा. वेटिंग फॉर अदर्स. होपफुली पीपल आर क्लियर विथ व्हाट वी आर प्लेइंग ऑन. सो द कॉन्सेप्ट रिमेन इज वेरी वेरी सिंपल. हम लोग क्या करेंगे? अमर सिंपल है. स्टार्ट नहीं, वो मत चेंज करना. स्टार्ट स्टार्ट ही रहेगा. फर्क है ये काउंटर से काउंट डाउन बन जाएगा. साइन उल्टा हो जाएगा. सर, माइनस माइनस भी होगा. वेरी गुड, वेरी गुड. So if we run this, let's give it a try. So Amar, let's give it 7 and let's give this as 2. And since मेरी बची पड़ी है, Amar, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Works without any problem, without any issue. Superbly, simply done. Everybody clear? यहाँ तक सब clear हो? Is everybody clear till this point? Come on, let me get a round of yes at least from few of you, so I understand सब लोग को समझ रहा है. Anybody who has a doubt, feel free to ask. वंडरफुल. चलो, अब आता है स्टेज 2. थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा सुपर के ऊपर जाते हैं. नाउ व्हाट वी इंटेंड टू प्ले दिस टाइम इज, व्हाट इफ आई कंबाइन बोथ द क्वेश्चन. सर मतलब द थर्ड लेवल क्वेश्चन. ये कोडिंग हैकाथॉन्स में आता है. प्रिंट स्टार्ट टू एंड इन एनी कंडीशन. अमर, ये क्या बात कर रहे हो आप? स्टार्ट एंड एंड, दिस कैन बी बोथ. सो करना क्या है वो समझो.
मैं समझा रहा हूँ ये पूरा क्वेश्चन. अगेन आई एम शोइंग यू विथ अवर स्क्रीन. ओके, विल गिव यू ऑनलाइन कंपाइलर्स का लिस्ट मैंने दिए है. ओके, आई हैव गिवन यू लिस्ट ऑफ ऑनलाइन कंपाइलर्स. क्लासरूम में चले जाओ, डे 1 के इसमें जाओ, उसमें ऑनलाइन कंपाइलर्स वी हैव मेंशन. यू गाइस कैन डू दैट. Okay, so currently going back to the story, here goes. So now let's try to understand this question because it's going to be more tricky and you need to learn designing now. So what designing? How to design solution from the question. So this time we are saying that print start to end where start and both are given by the user. Ab printing should be taking place in any condition. Sir, printing should be taking place in any condition क्या होता है? मतलब what kind of condition are we talking about? That's the fun part. What if I say start is 2, end is 6? You'll be printing 2, 3, 4, 5, 6. But it can be this way also, right? Start can be 2. Sir, so this can be minus 2. So this time we'll print 2, 1, 0, -1, -2. जो समझ गया अच्छी बात है. This is counter. I will increment. This is count down. I will decrement. कॉन्सेप्ट समझा? क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझा? ओके, अब let's understand designing. I'm showing you something which we call as a graphical way of designing. On a long run, especially if you're comms IT or if you plan to make a career in comms IT, AIDS, this is the way you will be solving problem. No, I take trainings for people on how we can code faster and better. उस ट्रेनिंग में मैं हर बार बोलता हूँ, never ever start coding looking at the problem. First create a sketch in your head. Sir, what is sketch? It's a flow diagram kind of a thing. So मैं न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी में यहाँ से बैठे बैठे ऑनलाइन लेक्चर से उन्हें सिखाता हूँ समथिंग विच वी कॉल एज अ विजुअल कोडिंग. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय विजुअल कोडिंग? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. तो यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है. कोर कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से चलेगा. अमर देखो, स्टार्ट यूजर देगा. लेट्स ब्रिंग डाउन द ब्लैक कलर. स्टार्ट अगर कम रहा एंड से तो अमर आई स्टार्ट से एंड तक जाएगा +1 के साथ बराबर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आएगा काउंटर का. परफेक्ट, वेरी गुड, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग. बट अमर 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 अगर स्टार्ट बड़ा रहा एंड से तो ये काउंट डाउन आएगा. परफेक्ट, आई एम नॉट सेइंग नो. तो अमर नो मतलब फिर करोगे क्या? करोगे, दैट इज मोर इंटरेस्टिंग ना. करोगे क्या? तो अमर आई अभी भी वही होगा, स्टार्ट टू एंड ही जाएगा, but this time step would be -1. So if we have this kind of a scenario and we want to practice this, let's understand. देख के मालूम पड़ रहा है हम लोग को कुछ चीज है. अब this is where visual coding comes into picture. Just concentrating on this part. थोड़ा इसे यहाँ पे ले लेता हूँ. तो अमर देखो, अगर आपने जो लिखा है और उसी ऑर्डर में अगर मैं करूँ तो few things I am clear with in my head. सर जैसे कि one thing. सी ये जो आप कंडीशन दे रहे हो ना सर, वो मेरे को लिखने आता है, वो इफ है. एंड ये मालूम है फॉर लूप है. अगर सर स्टार्ट लेस देन एंड नहीं रहा तो एल्स है. एंड ये फॉर लूप है. यू रियलाइज व्हाट आई एक्चुअली डिड? आई ब्रोक द कोड इन माय हेड हाउ टू वर्क विद इट. एक काम करो, गिव यू 2 मिनट्स. नोटपैड पे या ऑनलाइन वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट दिस डाउन इन योर वे. मतलब इसका सॉल्यूशन लिखा लो जो मैंने लिख के दिया है पार्शियली, उसका एक कोड लिखो और मुझे कॉपी पेस्ट करके दो. होपफुली पीपल आर वाचिंग मी थ्रू लैपटॉप, देन इट्स इजियर. वरना गिव मी हाउ वुड यू राइट दिस. मैंने पूरा तुम्हारा क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिकली ब्रेक करके दिया है, जहां पे इफ एल्स और फॉर सब कुछ दिख रहा है. अब सिर्फ इसे समझ के मुझे कोड लिख के दो. फ्रॉम इफ, फॉर, एल्स, फॉर, बस उतना लिख के दो. कैसे लिखोगे वो मुझे देखना है. If you have a notepad, you can use a notepad to write this. Online है compilers, तो online compilers में लिख सकते हो. मुझे सिर्फ उतना block of code चाहिए जो मैंने अभी लिखा है वो करके दे मुझे. Come on, think about this. Think about this, guys. Come on.
Come on, people, make it a point. Come on, come on. Think about how would you work. Think about how would you please. Think, think, think. It's not out of the world. It is very, very simple. You just need to put a logic to this. How? That's a question. Come on, people, give it a try. Let me see who can do this or who can dig it out कि क्या कर सकते हो. Good, Varun. Good try. Good start. Come on, come on, come on. You can type it in a notepad and फिर एक पूरा लिख के कॉपी पेस्ट कर लो. Easier. यहाँ पे टाइप करोगे जैसे एंटर मारोगे आ जाएगा. अगर यहाँ पे मल्टीपल लाइन टाइप करनी है यू कैन ऑलवेज यूज शिफ्ट एंटर. माइंड यू, सपोज मैं लिख रहा हूँ लाइन 1 शिफ्ट एंटर, लाइन 2 शिफ्ट एंटर, लाइन 3. तो ऐसे कुछ दिखेगा तुम लोग को. अब मैं एंटर मार रहा हूँ तो तीनों लाइन दिखेंगे. याद रखना ये मेरा नहीं, यूनिवर्सल है. नो, जूम, गूगल, whoever whatever you are using, shift enter will make you shift to the next line, so you can use it. Okay, come on, come on, come on, come on, people, give it a try. Give it a proper try. Come on, people. क्या बात है. Been perfect. Good to see. Good. People are doing good. Good to see that. Waiting for others. Come on. Whoa, 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 whoa. क्या बात है. Who is this? Devashri. क्या बात है. Good to see. Good to see. क्या बात है. Others are also writing codes. Good, good to see. Okay, chalo. My turn. So the core concept of this became very, very simple. Good to see that people are trying, in fact. So
गुड सर, हाउ टू मेक लूप प्रिंट 2 3 करेंगे ना, आगे है, डोंट वरी. सो करंटली इफ यू टॉक अबाउट दिस, लेट मी गो बैक टू द कोडिंग जिसके लिए हम लोग जाने जाते हैं. चलो, so if you go back to this, it's very very simple. start और end ले लो, and now start to end बराबर है. अब यहाँ से कोडिंग चेंज होगा. if my start is less than end, I'll start the loop and put a for behind that. start, हाँ अमर, start less than end यानी काउंटर है, तो अमर लेस देन इक्वल टू और आई प्लस प्लस. परफेक्ट, आई प्रिंट दिस. इफ नॉट, हाँ अगर नीचे नहीं प्रिंट करना है, सीरीज में ही प्रिंट करना है, लीव दिस, से परसेंटेज डी कॉमा एंड अ स्पेस एंड देन यू प्रिंट आई. वेरी सिंपल. अमर ये तो काउंटर का हुआ ना, काउंट डाउन रहा तो एल्स यू कम डाउन अगेन, कॉपी दिस फॉर. सर चेंज करेंगे रे, टेंशन मत लो. स्टार्ट से एंड, हाँ बट ये काउंट डाउन होगा. ओ सो ग्रेटर देन, एंड अमर यहाँ पे आके आई माइनस माइनस, यस आई माइनस माइनस, एंड यू आर डन, यू आर सॉर्टेड. सर सब ठीक है, चलो देखने में कितना टाइम लगता है. सो 3 वर्सेस 7, हाँ मेरा गड़बड़ है. सो 3 4 5 6 7 सही है. सर सर उल्टा करो, वी कैन डू दैट. इस बार उल्टा आंसर देते हैं. 7, लेट्स गिव 7 एंड लेट्स गिव 3. 7 6 5 4 3 2 मतलब 3. It worked in a very simple manner. So it can actually operate in either sides. This is the clue which we had to learn. Everybody clear with this? ये समझा सबको? Everybody is clear? Okay, everybody clear? Perfect, perfect, perfect. So let's try to go one step ahead. Okay, for loop ही use करते हैं. So I want one loop at a time so we can have our own exploration to work with it. Save as the next thing. Let's say for loop ही करेंगे, but for loop even. Amar, what is even? Anybody can give me list of even number? Write a code to print even number up to n. Anybody could give me even numbers क्या होते हैं? Anybody could give me even numbers? Perfect. जिसे evenly तोड़ पाए. 2 एक एक होगा, 4 2 2 होगा, 8 4 4 होगा. So even number. 6 again 3 3 होगा. So that's how you remember even number. Let's understand, mind you, the idea over here is Amar 2 4 6 8 up to n. Okay, now help me off with few questions. Okay, मेरा start कहाँ से होगा? Anybody could think and tell me start कहाँ से होगा? Come on, tell me this please. Start कहाँ से होगा? People, start from 0. You want to work, fine, I don't mind, तो 0. but मुझे बोलो मेरा start series का पहला नंबर कौन सा है? 0 एक्चुअली इवन ऑर्डर में आता ही नहीं, वो 0 0 है बस, वो है. So let's take 2. So my start is 2. Okay, this is how you should think guys. 2. अब मुझे बोलो end कहाँ पे होगा? तो मेरा इतना तो क्लियर है अमर, I equal to 2 I will work. I कब रुकना चाहिए? end कब होगा? n पे. So what condition I will write? याद करो. What condition I will write? काउंटर है, तो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू? दैट्स अ क्वेश्चन. क्या होगा? सोचो. क्वाइट इंटरेस्टिंग. टेल मी. Think. What you will write? Come on. What you will write? Perfect. So less than equal to n. स्टेप वी आर वेरी क्लियर, बढ़ने वाला है. बट यहाँ पे स्टेप जरा ध्यान से देखो. 2 और 4 में डिफरेंस कितना है? 2 और 4 में डिफरेंस कितना है? एनीबडी? 2 और 4 में डिफरेंस कितना है? परफेक्ट. 4 और 6 में मतलब सर काम धंधा नहीं है, 2 का डिफरेंस है यार. 2 का डिफरेंस मैं ऐसे लिख सकता हूँ. हाँ 2. ओके, हाँ कुछ बुद्धिजीवी हैं. वी हैड वन ऑफ द स्टूडेंट, सर व्हेन आई आस्क्ड हिम, व्हाट एग्जैक्टली यू हैव डन? सर सिंपल है, आई प्लस प्लस से 1 बढ़ता है, तो आई प्लस 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 से 2 बढ़ेगा.
मेहरबानी करके ऐसे कांड मत करके आना, मेरा नाम जाएगा, मेरा नाक कटेगा। तो भाई ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ओके? सो विल राइट दिस वे। सो इफ यू वांट टू सी हाउ वुड यू वर्क, तो विल गो विथ वेरी सिंपल थिंग, एंटर एन। हम लोग एन ले लेंगे। अब यूजर तुमको इतना प्यार से मांगेगा, वो थोड़ी तुम ना बोलोगे उसको, तो यूजर से ले लो। सो यू विल बी टेकिंग एन। अलसीगिरी का लिमिट हूं मैं, बट फिर भी छोड़ दो। एन ले लिया। प्रिंटिंग टू परसेंटेज डी, जो भी एन होगा वहां तक, ओके? अमर कंडीशन वी डोंट रिक्वायर। नीचे का मोह माया छोड़ दो। तो मतलब अमर ये आप 2 से ही चालू करोगे? हाँ। एंड कब होगा? एन पे होगा। आई प्लस नहीं, इक्वल टू 2, द शॉर्ट एन ऑपरेटर। सेव इट एंड वी वर्क विद इट। हाँ ये, हाँ ये हटा देते, दैट्स इट। तो नाउ इफ आई वर्क दिस, मैं n को, नाउ माइंड यू, मैं जानबूझ के एक चेंज भी कर रहा हूं। आई एम गिविंग n as 13, so last number should be 12, 14 should not come. It is working perfectly. So 2, 4, 6, 8, 10, 12. Everybody clear with this code? People give me round of yes. Come on, if you're clear, give me round of yes. Come on, come on, come on. This is interesting. Perfect. Wonderful. बस इतने लोग ही क्लियर हुए? Go on, you guys are still 49 people attending this. Okay, चलो, good. थोड़ा बोलने के बाद जागते हो ना? Okay, if this is what we are talking about, if this is what we are talking about, okay, think and tell me. ये मैं तुम लोग को भी दे रहा हूँ, इसलिए कॉपी किया। Given. अब मुझे बोलो, अगर इसी कोड को मैं चेंज करूं, फॉर लूप, अब ऑब्वियस है, सोच लो मैं क्या करूंगा, ऑड। मुझे बोलो ऑड नंबर, प्रिंट राइट को ऑल ऑड नंबर्स अप टू n, यानी कि मेरा प्रिंटिंग होगा 1, 3, 5 अप टू n। स्टार्ट कहां से होगा, कंडीशन क्या होगा, और स्टेप क्या होगा? एनीबॉडी कुड टेल मी, स्टार्ट कहां से होगा? स्टार्ट कहां से होगा? ओहो, ओहो, परफेक्ट, क्या बात है, स्मार्ट लोग हो रहे हो तुम लोग। One. Perfect. So see, coding is fun when you understand. Problem is college. कॉलेज इतना प्यार से सिखाना ना कि वो प्यार तुम लोग को भारी पड़ता है। जस्ट वन चेंज, अमर चल जाएगा, अरे दौड़ जाएगा। इफ आई पुट 17 एज अ नंबर, 1, 3, अरे चलने लगा, चलो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। योर जॉब इज डन, योर जॉब इज डन। ओके, द लास्ट थिंग फॉर द डे, आई टोल्ड यू कि इनिशियली छोटे थे, अब थोड़े थोड़े 1.5 घंटे 90 मिनट्स तक के लेक्चर्स होंगे। So now one more thing. Now one more thing. What if I tell you? अब जरा थोड़ा नया टाइप का, जरा संभाल के, 3 and 5 समझाता हूँ। Write a program to print all numbers perfectly divisible by 3 and 5. Sure, but from between 1 to 100. 1 to 100 ऐसे नंबर चाहिए जिसमें all numbers should be perfectly divisible by 3 and 5. अब भैया पहला एक क्वेश्चन दिमाग में खुद को पूछना, ये याद रखना, व्हाट ऑपरेटर गिव्स परफेक्ट डिविजिबिलिटी? विच ऑपरेटर गिव्स परफेक्ट डिविजिबिलिटी? उसके लिए कौन सा मैथ ऑपरेटर था जो बोलता है परफेक्ट डिविजिबिलिटी देता है? इतना याद दिला दूं कि वो अगर परफेक्टली डिवाइड करता है तो रिटर्न 0 करता है। स्मार्ट, क्या बात है, गुड टू सी। और अपने पास, अच्छा मुझे और एक चीज बोलो, कौन सा ऑपरेटर था जो 2 कंडीशंस को कंबाइन करता है? एंड, कैसे? दिस एंड दिस एंड दिस, कौन सा ऑपरेटर था? क्या बात है, ओ यू गाइस आर ऑन फायर, लव टू सी। या तो मैं बहुत अच्छे से सिखा रहा हूं और तुम लोग बहुत स्मार्ट हो। आई विल कंसीडर द सेकंड थिंग, यू गाइस आर मच स्मार्टर, गुड टू सी। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, अमर इट्स वेरी वेरी सिंपल, इसमें एन तो आएगा ही नहीं, आई एग्री। अब अमर एन, सॉरी एन आएगा, माय बैड सर, एक मिनट सोच लो, 1 से 100 ना, आई डोंट रिक्वायर एन, देन हटा दो, सब मोह माया उड़ा दो। अच्छा तो सर एन का जरूर नहीं है,
आई चालू होगा 1 से, 1 से 100 ना? सर एक-एक नंबर लेंगे? हाँ, एक-एक नंबर लेंगे। अब ज़रा सोचो, इफ नाउ देयर इज़ अ इफ कमिंग इन दिस पार्ट, इफ कमिंग इन, तुम लोगों को सब कुछ आता है, सब कुछ एक साथ यूज़ करेंगे। चलो, सर क्या करोगे? आई mod 3 इक्वल टू 0 एंड आई mod 5 इक्वल टू 0, तो क्या करोगे? सिंपल है, ये बाहर चला गया बेचारा, उसे अंदर लेके आओ। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। हाँ, एक बार प्रिंट करना है तो प्यार से प्रिंट एफ स्लैश एन, all numbers perfectly divisible by 3 and 5 are, बाकी का काम कर लेगा ये। एआई कभी कभी बहुत अच्छा काम आ जाता है। सो वी वर्क विद ऑल नंबर्स परफेक्टली डिविजिबल बाय 3 and 5 आर, विल गेट अ लिस्ट ऑफ इट। सर ये चलेगा क्या? दौड़ेगा? रन करते हैं। वाई इसमें एरर है, हाँ सेमीकोलन भूल गया, तो सेमीकोलन डन, दिस इज व्हाट वी स्टार्ट रनिंग द सिस्टम। तो 3 से 5, 1 से 100 के बीच में हुआ परफेक्टली डिविजिबल बाय 3 एंड 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90, दिस इज व्हाट वी डिड। एवरीबॉडी क्लियर विद टुडेज लेक्चर? कॉन्सेप्ट समझा? सिर्फ एक ही लूप अभी तक हम लोग ने किया है, फॉर लूप, बट डिड यू रियलाइज व्हाट फॉर लूप इज कैपेबल ऑफ? एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? सर कैन वी यूज I15 इक्वल टू 0? स्वराज एक्सप्लेन दिस, मतलब नहीं समझा। ओके, चलो, लव टू सी एक चीज है, आई एम गोइंग बिट स्लो फॉर वन ऑब्वियस रीजन, आई डोंट वांट टू रश इनटू लॉट ऑफ डेटा इनटू योर हेड, बट मेक इट अ पॉइंट दैट एवरी वीक व्हेन आई डू समथिंग व्हिच यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड recap that. Now along with all this thing you will be able to see few things in your classroom, so classroom का link मैंने दे दिया है तुम लोग को। okay, so do make it a point that you have all these details available. I'll also give you, हाँ, अगर लूप में जाओ, I'll just share my screen now.